हेलो एवरीवन, अगर आप भी रिटन और स्पोकन इंग्लिश में माहिर होना चाहते हैं तो आपको अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी जरूर इंप्रूव करनी होगी। और आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को इंप्रूव करवाने के लिए हमने 3000 वर्ड्स पर मुश्तमिल कंप्लीट कोर्स का आगाज किया है, जिसकी आज हमने करनी है क्लास नंबर 4। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आज से ही क्लास नंबर 1 से इस कंप्लीट कोर्स का आगाज कर लें। दोस्तों, मेरा नाम आसिम है और आप मुझे सुन रहे हैं AQ इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। चलिए हमारे आज के सबक का आगाज कर लेते हैं। दोस्तों, हमारी हर क्लास में हम इंग्लिश के 100 अल्फाज सीख रहे हैं, उनके उर्दू माने और उनके सेंटेंसेस में इस्तेमाल के साथ। आपने इन तमाम अल्फाज को अच्छी तरह से सीखने के लिए 2 से 3 काम लाजमी कर लेने हैं। नंबर 1, हर वर्ड को और सेंटेंस को मेरे साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करना है, जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी। और जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपकी ग्रामर, सेंटेंस मेकिंग और ओवरऑल वोकैबुलरी भी साथ साथ इंप्रूव होगी। आप वर्ड्स को जब अपने सेंटेंसेस में यूज करना सीखेंगे तभी वो आपकी वोकैबुलरी में ऐड होंगे। नंबर 2, साथ साथ नोट्स लाजमी बनाइए। जब भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई नया वर्ड हमें सीखने को मिले इन वर्ड्स के अलावा, तो आपने उसको अपने नोट्स में साथ लिख लेना है। इन वर्ड्स को भी अगर आप अलग से लिख लें तो बहुत अच्छा है। इनके आपने सेंटेंसेस भी बनाने हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करके उसके बाद ये कैसे चेक करें कि हमने सही सेंटेंसेस बनाए हैं, इसका सिंपल सा तरीका है, चैट जीपीटी का अकाउंट बनाइए और अपने सेंटेंसेस चैट जीपीटी को चेक करवा लें। उसे बोलें कि आपके सेंटेंसेस चेक करके आपको आपकी स्पेलिंग, ग्रामेटिकल और ओवरऑल इंग्लिश की मिस्टेक्स बता दे। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज के 100 इंग्लिश अल्फाज सीखना शुरू कर लेते हैं। शक होना या शुबा होना की इंग्लिश है सस्पेक्ट, जो कि एक वर्ब भी है और नाउन भी है। यानी अगर आपको किसी पर शक हो तो आप कह सकते हैं आई सस्पेक्ट दैट पर्सन। किस चीज़ के लिए? जो उसने क्राइम या जो उसने गलत काम किया है। ठीक है, जब आप काफ़ी हद तक श्योर होते हैं, आपको ऑलमोस्ट यकीन होता है कि ये बंदा इस गलत काम में इन्वॉल्व है, तो वही शख्स आपका सस्पेक्ट भी होता है। देखिए, आप उस पर शक कर रहे हैं और वो आपका मुश्तबे है। ठीक है, यानी वो मशकूक है आपके लिए। राइट? ओके, यहीं पर एक और वर्ड भी थोड़ा सा देख लेते हैं, डाउट। यहां पर शक बिल्कुल थोड़ा सा होता है। ठीक है, हल्का सा शक है। यहां पर आप श्योर नहीं होते, आपको इस बात का यकीन नहीं होता कि उस शख्स ने वो गलत काम किया है, आपको बस थोड़ा सा लग रहा होता है। ठीक है, लेकिन यहां जब हम कहते हैं सस्पेक्ट, तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी हद तक आपके ख्याल में मुजरिम है, और यही सस्पेक्ट होने की बेसिस पर पुलिस किसी को अरेस्ट भी कर सकती है। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। आई सस्पेक्ट दैट दोज किड्स स्टोल द मनी। आई सस्पेक्ट दैट दोज किड्स स्टोल द मनी। स्टील की सेकंड फॉर्म है स्टोल। ओके दोस्तों, स्टील भी 2 तरह के हैं, एक ये वाला जो कि मेटल है और एक ये वाला चुराना। इसका मतलब है चुराना। ऑलराइट, यहां अगर किड्स की बात करें तो किड्स को आप चिल्ड्रन भी कहते हैं। समटाइम्स चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस बोल दिया जाता है, जो कि गलत है। चाइल्ड की प्लूरल है चिल्ड्रन। ऑलराइट, चाइल्ड है सिंगुलर यानी वाहिद और चिल्ड्रन इसकी प्लूरल है जमा, तो इसके साथ कभी भी एस नहीं आता। ऑलराइट दोस्तों, यहां मैंने सस्पेक्ट वर्ड को यूज किया है एज अ वर्ब। अब नाउन के तौर पर इस वर्ड को आपने यूज करना है और कमेंट्स में इसका सेंटेंस बनाकर बताना है। आगे बढ़ते हैं। मदद करना, एड। एड। द डॉक्टर एडेड द बॉय। द डॉक्टर एडेड द बॉय। क्या आप मेरे साथ साथ इन वर्ड्स को और सेंटेंसेस को बोलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं? अगर नहीं तो अभी से शुरू कर लें, इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। किनारा, एज। एज। He ran to the edge of the cliff. Cliff, चट्टान। He ran to the edge of the cliff. बोलकर लिखवाना, dictate. Dictate. He dictated his speech. He dictated his speech. Sarga, resort. Resort.
We live near a popular resort area. We live near a popular मकबूल मशहूर resort area. हम एक मशहूर सैरगाह के करीब रहते हैं. रास्ता path. We followed a path through the woods. We followed a path through the woods. Saya, shadow. The man's shadow was taller. The man's shadow was taller. कामयाब होना, succeed. He will continue to work until he succeeds. वो उस वक्त तक काम करता रहेगा जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता. वादी, valley. We looked at the valley below. तारीफ करना, admire. I admire my brother for his work. I admire my brother for his hard work. कोशिश करना, attempt. I'm attempting to learn English. I'm attempting to learn English. इख्तियार होना, authority. The policeman has authority on the streets. Darul Hukumat, capital. We'll visit the capital of the city. Taawun karna, cooperate. The students cooperated with teacher. Difa karna, defend. The soldiers defended the town. Tabahi, destruction. There was much destruction in the city. Betartibi, disorder. There were many papers in disorder. Hissa, division. The chart has 6 divisions. Qabil banana, enable. The key enables us to open the door. Mayus karna, frustrate. The machine frustrated me. Hukumat karna, govern. The president governs for 4 years. Kafi या बहुत ज़्यादा, plenty. The library has plenty of books in it. आराम पहुंचाना, relieve. और आराम की इंग्लिश होगी relief. The medicine relieved the sick boy. Shuhrat, reputation. The doctor had a good reputation. Shahi, royal. The king sat upon the royal throne. Ghulam, slave. Ghulami, slavery. The slave worked very hard all the day. Jiddojohad karna, struggle. He struggled day and night. Ahmak, stupid. He said something stupid. Shahri, citizen. He's a Pakistani citizen. Alan karna,
declare. I declared my love for him. I declared my love for him. बहुत बड़ा, enormous. My dog looks enormous next to yours. My dog looks enormous next to yours. गैर मामूली, extraordinary. Extraordinary. Your work is really extraordinary. Your work is really extraordinary. Dhund, fog. I didn't want to drive in thick fog. I didn't want to drive in thick fog. Janaza, funeral. I saw a funeral of small child. I saw a funeral of small child. Bada, giant. Giant. The giant truck got in my way. The giant truck got in my way. Tasur, impression. Impression. My first impression on her was perfect. My first impression on her was perfect. Amdani, income. Her company pays her a fairly good income. Her company pays her a fairly good income. Pagal hona, mad. Ali got mad after listening this. Ali got mad after listening this. Chahiye, ought. I ought to take my library books back. I ought to take my library books back. Mazahmat karna, resist. Mazahmat, resistance. He resisted the treatment at hospital. He resisted the treatment at hospital. Zahir karna, reveal. I'll reveal your secret. I'll reveal your secret. Nijat dilana, rid. We rid our home of mice by using traps. We rid our home of mice by using traps. Talwar, sword. They used swords in battles. They used swords in battles. Kahani, tale. She told her a horror tale. She told her a horror tale. Pansana, trap. We trap butterflies in a net. We trap butterflies in a net. Mukaddama chalna, trial. Trial. We went on a trial for robbing the bank. We went on a trial for robbing the bank. Zalim, violent. He was very violent boy. He was very violent boy. Ilzam lagana, blame. My mom blamed me. My mom blamed me. Patient goi, forecast. Forecast. The forecast says that it will rain. The forecast says that it will rain. Naram, ya Sharif, gentle. He's very gentle with the baby. He's very gentle with the baby. Dakhal dena, interfere. Interfere. Don't interfere in my matter. Don't interfere in my matter. Halke se, lightly. Draw lightly so you don't tear your paper. Draw lightly so you don't tear your paper. Guitar, row. Please stand in a row. Please stand in a row. Almari, shelf. I keep my clothes in a shelf. I keep my clothes in a shelf. Gila, wet. My dog was wet. My dog was wet. Gali dena, abuse. He abused me. He abused me. Gunjaish hona ya istatat rakhna, afford. Afford. I can afford to buy a new bike. I can afford to buy a new bike. Pakana, bake. She bakes delicious cakes. Pali, bean. There were many different kinds of beans. There were many different kinds of beans. Mombati, candle. Candle. He blew out the candles. He blew out the candles. Qarz, debt.
I owe a debt to the gas company. I owe a debt to the gas company. कम करना, decrease. Police decrease the crime in city. Police decrease the crime in city. गलती, fault. It's not my fault. Amla, crew. My father has a crew. My father has a crew. Sahi, generous. Generous. He is a generous man. He is a generous man. Ajza, ingredients. Ingredients. The main ingredients in cake are eggs. The main ingredients in cake are eggs. Israr karna, insist. I insist that you try some cookies. I insist that you try some cookies. Mukhalfat karna, oppose. I always oppose crime. I always oppose crime. Sosya ghairfal, passive. He is a passive observer. He is a passive observer. Miqdar, quantity. I have a small quantity of milk. I have a small quantity of milk. मुकदमा दायर करना या दावा करना. Sue. I sued the company. I sued the company. Bechani, anxiety. Anxiety. He was filled with anxiety. He was filled with anxiety. Arab, billion. There are billions of stars in the sky. There are billions of stars in the sky. Tarashna, carve. I would like to carve wood. I would like to carve wood. Mashwara karna, consult. I'll consult my doctor. I'll consult my doctor. Waqf karna, devote. Devote. She devotes 2 hours a day to play piano. She devotes 2 hours a day to play piano. Kismet, fortune. Fortune. I've good fortune when I play cards. I've good fortune when I play cards. Kodna, dig. He digs in yard to hide things. He digs in yard to hide things. पहाड़ पर चढ़ना या पैदल सफ़र करने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं हाइक और इस एक्टिविटी को हम कहते हैं हाइकिंग. He loves hiking. He loves hiking. Ibtidai, initial. Initial. The initial step was very difficult. The initial step was very difficult. Shadid, intense. Intense. There was an intense odor in the air. There was an intense odor in the air. Udhar dena, lend, और उधार लेना, borrow. अगर मैं उधार ले रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं borrow कर रहा हूं, और अगर मेरी तरफ से किसी की तरफ कोई चीज उधार जा रही है तो इसका मतलब है मैं lend कर रहा हूं. ओके, उधार देना. Please lend me a camera for few days. Please lend me a camera for few days. और अगर यही बात मुझे कुछ इस तरह से कहनी है कि मुझे कैमरा कुछ दिन के लिए उधार दें, तो क्या मैं ऐसे कहूँगा, Please borrow me a camera for few days? बिल्कुल नहीं. तब हम रिक्वेस्ट करेंगे. कैसे? कैन को यूज करते हुए. Can I borrow your camera for few days? Can I borrow your camera for few days? तो इस तरह से जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि क्या आप मुझे उधार दे सकते हैं, तो उधार देना के लिए हमारे पास वर्ड आ गया borrow. ओके, और उधार लेना के लिए lend. ओके, let's continue. चोटी, peak. Peak. There is snow on the peaks of mountains. There is snow on the peaks of mountains. सलाहियत, तवानाई, इस्तादाद, हिम्मत, इन सब वर्ड्स के लिए एक ही इंग्लिश वर्ड है जो कि है potential. You have potential to achieve your goal. You have potential to achieve your goal. Fakhr, pride. Pride. I take pride in getting good grades. I take pride in getting good grades.
subut, proof, proof. They used fingerprints as proof. They used fingerprints as a proof. छोड़ना, quit. और फिर एक ये वर्ड है quiet. इसको हम कहते हैं quiet यानी खामोशी वाला. इसका मतलब है छोड़ना, कोई आदत छोड़ना, कोई काम छोड़ना. और फिर एक इसी के साथ मिलता जुलता वर्ड है quite, जिसका मतलब है तकरीबन, almost. I quit running because I got tired. I quit running because I got tired. घूमना, spin, spin. The boy kept spinning until he fell down. The boy kept spinning until he fell down. छोटा, tiny. A baby's hand is tiny. A baby's hand is tiny. मुअल्लिम या उस्ताद के लिए हम वर्ड यूज करते हैं tutor. My mother hired a tutor for me. My mother hired a tutor for me. जाहिर या आया, वाज़े, apparent, apparent. Her happiness was apparent. Her happiness was apparent. Andha, blind. The blind man didn't see the hole. The blind man didn't see the hole. ऐड करना, commit. और ऐड की इंग्लिश क्या है? Commitment. He had committed to finishing the job. He had committed to finishing the job. लिखना या तहरीर करना, compose. Ali composed Ahmad's report. Ali composed Ahmad's report. थक जाना, exhaust, exhaust. Ali exhausted himself by swimming. Ali exhausted himself by swimming. Hissa, portion, portion. I only ate a small portion of pizza. I only ate a small portion of pizza. Shadid, severe, severe. Ahmad was in severe pain. Ahmad was in severe pain. Nazar ya binai, vision, vision. The eye doctor tested my vision. The eye doctor tested my vision. Jazb karna, absorb. He used a sponge to absorb the water. He used a sponge to absorb the water. All right, my dear friends, this is all for today. We have learned almost 100 words with their Urdu meanings and their use in sentences. Thank you for listening. I'll be talking to you in the next video very soon. Take care. Bye for now.